in the previous class, we talked about that for an elastic collision, what happens for an inelastic collision, and I told you that that combined velocity of the objects after inelastic collision is given by this, right? This is what we discussed. इसमें एक और चीज ये है कि अगर आपसे वो पूछता है what is the loss in kinetic energy, what is the loss in kinetic energy after the collision, तो उसमें आप क्या करेंगे? If they ask you the loss in kinetic energy, so we'll do a question for this first and then we'll proceed, right? You have two train carriages and their masses are 5,000 kilograms, right? And they roll towards one another on a level track. One is traveling at 2 and the other is traveling at 1. They collide and they join together. They collide and they join together. What is the kinetic energy lost during the collision? Now what happens is that पहले तो आप kinetic energy find कर लें before collision, ठीक है? आप पहले that is 1/2 m1 u1 square plus 1/2 m2 u2 square, which is u1 is, this is m2 is 5,000 and this is -1. ये -1 से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो स्क्वायर हो जाएगा. इसका आंसर क्या आता है? This is the kinetic energy before collision, right? अच्छा, when they stick together, you have to find the common velocity after they stick together. So m1 u1 plus m2 u2, m1 plus m2 into v. Now m1 is 5,000, u1 is 2, m2 is 5,000 and u2 is -1. ऐसे ही है, is equal to 5,000 plus 5,000 into v. v निकाले 0.5 आता है, आप करके देखेंगे, it would be 0.5, right? ठीक है, 10,000 minus 5,000 over 10,000 is 0.5. अब इसकी kinetic energy after the collision क्या होगी? 1/2 m1 plus m2 is 10,000 into this v square. v is 0.5 whole square, ठीक है? और इसको जब आप करेंगे तो आंसर आपके क्या आएगा जी? 1250. अब ये आफ्टर है, ये बिफोर है, तो लॉस कितनी होगी? बिफोर माइनस आफ्टर, ठीक है? बिफोर माइनस आफ्टर. सो दिस इज 12,500 minus 1250 and that is going to be 11,250. बिफोर कैसे निकालेंगे? half m1 u1 square plus half m2 u2 square, and kinetic energy which is lost is, ये जो अभी हमने की है, that is, this is the right way, before minus kinetic energy after. उनको माइनस करें, आपका आंसर लॉस्ट है. लेट्स टॉक अबाउट एक्सप्लोजन्स, राइट? एक्सप्लोजन्स का मतलब है चीजें जब फटती हैं, जब चीजें फटती हैं, राइट? एक फायरवर्क आपके पास क्रैकर पड़ा हुआ है, वो फटता है. आपने नोट किया होगा जब चीजें फटती हैं तो ऐसे नहीं होता कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चली जाए, इस तरह जाए या इस तरह जाए. ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा आपने? Have you thought why this happens? Like the things go in the other direction. This goes here, this goes here. Have you ever thought about this? एक फायरवर्क, एक बॉम्ब है, वो फटा है, तो बॉम्ब ने उसके पार्टिकल्स इधर उधर जाएंगे, कभी एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे. उसकी वजह ये है कि मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज 0 because it is at rest. In order to conserve the momentum, one velocity should be positive and the other velocity should be negative, so that the answer becomes 0. अगर आपके पास वेलोसिटी एक पॉजिटिव नहीं होगी और दूसरी नेगेटिव नहीं होगी, तो जब आप मोमेंटम आफ्टर द एक्सप्लोजन निकालेंगे तो वो 0 नहीं होगा. उसको कंजर्व करने के लिए आपके पास क्या होता है? उसको कंजर्व करने के लिए क्या होता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट राइट पे जाएगा तो दूसरा लेफ्ट की तरफ जाएगा. अब एंगल्स पे कैसे जाएगा वो हम बाद में देखेंगे. वी हैव हियर
a particle which is stationary or at rest. This is of mass m. I'm going to write it as capital M. This is stationary or at rest. What happens is that it explodes. When it explodes, one mass goes here. This is m1. The velocity is v1, and it's positive because it's going towards right. Okay? Here, the other mass goes here. This is m2. The velocity is going to be negative because it's going towards left. I'll take it as minus v2, right? अच्छा, उसके बाद the momentum before explosion is what? That is mu, but mu is 0. Here in this case, u is 0. Since m is stationary, u is 0. So momentum before explosion is 0. ठीक है? It is 0 kg meter per second. अच्छा, उसके बाद since the momentum conserves for an isolated system, बेटा आप लोग बात ना करें. Since the momentum conserves for an isolated system, the momentum before explosion should be equal to momentum after the explosion. The momentum before explosion must be equal to the momentum after. So we can have here mu is equal to m1 v1 plus m2 v2, and you know that this is 0 and v1 is positive because it is going towards right. v2 is bound to be negative. ठीक है, ताकि आपका आंसर 0 आ जाए, right? क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा, what is the ratio of, if an object explodes and one mass goes here, one mass goes here, what is the ratio of v1 over v2? They'll ask you what is the ratio of v1 over v2. What would be the ratio? आप आराम से कर सकते हैं इसको. The answer is B. You just had this equation which is m1 v1. This will go here. This will be m2 v2. So and m1 over जो आपके पास ये v1 over v2 है वो क्या बनेगा? That would be m2 over m1. लेकिन अब हम बात करेंगे जब चीजें एक्सप्लोड होती हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लोड नहीं कर रहा है, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोलिजन होती है एंगल पे और उसके बाद एक्सप्लोजन एंगल पे मैं आपके साथ करूंगा. मैं जो अच्छा ये अब है कोलिजन्स इन 2 डायमेंशंस. हमने 1 डायमेंशन कर लिया. I'm going to talk about collisions in 2 dimensions, and you'll see the question and then I'll explain what is happening, right? This is collisions in 2 dimensions. A lot of questions from your worksheet, paper 2, paper 1 are based on this. This is the most important part of this chapter. A ball of mass m traveling at velocity u collides with a stationary ball of mass capital M. After collision, the 2 balls travel at velocities m and v respectively in the directions shown. A student writes the 3 equations relating to the collision. Which row in the table indicates the correct and incorrect
इक्वेशंस। ये अब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ टकराया और जैसे स्नूकर आप खेल रहे हैं, एक बॉल आई है दूसरी बॉल के साथ टकराई है और ये बॉल इधर चली गई है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। द आंसर इज डी, बट हाउ? लेट मी सॉल्व इट, बिकॉज ये तो ए नंबर का क्वेश्चन है ना, पेपर 2 के अंदर 5 नंबर का सवाल आया हुआ है। लेट्स सी। You will treat the momentum separately in horizontal and vertical directions. You'll bring components into effect. Components आपकी जान नहीं छोड़ेंगे. Components are a very good entity, and you always should have components in mind when you're dealing with angles. हमेशा आपके ज़हन में स्ट्राइक करना चाहिए ये component आए. अच्छा, what's happening is, अभी गौर से देखिएगा. You have a mass m here. You have a mass m here, and the velocity is u. You have another mass here, and for example, it was stationary, right? This mass is at rest. And here u2 is equal to 0. This was u1, this was equal to u, and this was at rest. And basically what is happening is that this is before collision. Abhi collision nahi hui. This is before collision. Acha, ab kya hoga? They are going to collide with each other, right? And they're going to go like this. The small mass m goes at a velocity small v, and this capital mass, which is capital M, it goes with a velocity that is capital V, right? This goes with a velocity capital V, this goes with a velocity that is small v. This angle here is 30 degrees, and this angle here is 40 degrees, as we saw in the question, right? Are you getting what I'm saying? अच्छा, अब हुआ क्या है कि आपने इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं. इसको आप अगर देखें तो ये आपके पास वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या बनेगा? What would be this component here of this small v cos of 30? And what would be this component that is going to be small v sine of 30? अच्छा, उसके बाद this is going to be capital V sine of 40, and this is going to be capital V cos of 40. So you have resolved the velocities into different components. Now, what you're going to do is you are going to treat the horizontal component of the momentum separately, and you have to treat the vertical component of the momentum before and after collision separately. So if I deal with the momentum in the horizontal direction first, momentum in the horizontal direction, you know the equation, the general equation is m1 u1 plus m2 u2, right? m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, but you're going to transform that according to the components, right? So m1 u1 here is m is this, u1 is u, m2 is capital M, u2 is 0. m1 is small m. I'm talking about horizontal direction here. What is v1? What is v1 here? I'm talking about horizontal direction only. That is small v cos of 30. Excellent. And what about the capital mass M? That is capital M, and this would be what? Capital V
cos of 40. Is that clear? And this becomes what? This becomes mu is equal to mv cos of 30 plus capital M capital V cos of 40. So we have one equation that is here. One of the equations is here, right? Is that clear? Uske baad, I'll be dealing with the momentum in the vertical direction, right? I've just done the momentum in the horizontal direction. I'll be talking about the momentum in the vertical direction. Momentum in the vertical direction. अच्छा, अब सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि शुरू में मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? जीरो है, वो वर्टिकली तो मूव ही नहीं कर रहा. आप देखें, अगर गौर करें तो मोमेंटम शुरू में वर्टिकली तो जीरो है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है. सो वी हैव हियर m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. But you already know that since it is not moving, since objects are not moving, vertically, initially, what's going to happen is that this entire thing goes to zero. Vertical तो motion ही नहीं हो रहा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो ये m1 v1 है, ये आपके पास क्या बनेगा? This is m. What is v1 here? V sine 30. Very good. This is v sine of 30. And m2 is capital M. What would be v2? It would be minus v sine of 40 because it's going down. The component is down. So this is minus v because you see that the direction is downwards here and the component is down. So if direction upwards is positive, down is negative, right is positive and left is negative, right? So we have here minus v sine of 40 degrees. And now this becomes mv sine of 30 minus capital mv sine of 40 is equal to 0. And this becomes mv sine 30 is equal to mv sine of 40. So this is the second equation that you'll get. And these two equations are valid for such a direction of motion, right? And you can see here, the answer for this question is what? What is the D is the correct answer. We have here pulley on a slope भी हो सकती है, slope नहीं भी हो सकती. मैं slope पे करवा रहा हूँ, जरा ज़्यादा tough होता है ताकि आप किसी किस्म का question भी कर लें. I have here a slope like this. There's a mass here. There is a frictionless pulley which is attached here. There is a string which is attached with this mass and it goes over the pulley and it is attached with another mass here. Okay. This angle here is theta. This mass, I'll call this m1, has the weight which is m1g. This angle here is theta. Why is this angle theta? Do you have any idea? मैंने बताया था आप लोगों को, अगर कोई चीज स्लोप पे आ जाए, अगर कुछ स्लोप पे आ जाए और अगर देखिए ये इसका वेट है
ये एंगल थीटा है। अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना के यहाँ पे 90 बना देगा। ये एंगल क्या होगा? 180 माइनस 90 माइनस थीटा, विच इज 90 माइनस थीटा। ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। आप देखें ना, 180 माइनस 90 प्लस थीटा इज, ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं इस तरह से देखूं तो ये पूरा एंगल भी 90 है। ये पूरा एंगल भी, दिस वन इज 90। ये देखें, ये वाला। आपको ये वाला एंगल जो है ना, ये चाहिए, ये वाला, ये दिस वन। यू नीड दिस एंगल, राइट? यू नीड दिस एंगल, एंड व्हाट यू कैन डू इज दिस 90 minus this 90 minus theta will give you what? So this angle is theta. This is the reason this angle is always equal to theta, right? ठीक है? Mathematics and physics are my favorite. Maths और physics जो है, they are too good. अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये कंपोनेंट, ये वाला क्या होगा? ये वाला कंपोनेंट जो एंगल के साथ है, हमेशा कॉस होता है। दिस इज mg cos of theta। और एंगल के सामने वाला क्या होगा? यू नो दैट द वर्टिकल, दिस यहां पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन रहा है, बट दिस इज गोइंग टू बी mg sin of theta। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसका मास है m2, इसका वेट एक्ट कर रहे हैं m2g। अच्छा, ये स्लोप जो है ना, एक रफ स्लोप है। इट्स अ रफ स्लोप। रफ स्लोप पे हमेशा फ्रिक्शन होगी और स्मूथ स्लोप पे फ्रिक्शन नहीं होगी। सो रफ स्लोप हैज फ्रिक्शन which is equal to f. So the friction here is f, and also there is a component of weight which is acting backwards. आप जब treadmill करें तो you know that if you incline it, you have to put an extra effort because you have to overcome the effect of this component, right? This component mg sin theta is causing you to go down, and you have to put an extra effort. That's why working out on the inclined treadmill is really effective, because you have to do extra work. So this here is what this is. This component of weight is m1g sin of theta. ऐसे ही है, ठीक है? अच्छा, अब एक और बात, यहां पे इस स्ट्रिंग के अंदर कुछ टेंशन है। टेंशन जो होती है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड अलोंग द कॉर्ड, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द रोप। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये एक स्मूथ पुली है। स्मूथ पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। आपके सिलेबस में स्मूथ पुलीज ही हैं, ठीक है? स्मूथ पुली हियर, तो यहां पे भी टेंशन होगी, लेकिन वो अलोंग द कॉर्ड एक ही रहेगी क्योंकि ये स्मूथ पुली है। और यहां पे ये टेंशन यहां पे एक्ट करेगी। नहीं, वो यहां इस पार्ट पे आप देखें तो वो टेंशन यहां एक्ट कर रही है, वेट इधर एक्ट कर रहा है। आपने ये पार्टिकल लेना है यहां पे, इस पार्टिकल को, हाँ, ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कंडीशन सिचुएशन ये है कि ये ऑब्जेक्ट यहां से नीचे जा रहा है, ये वो ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर जा रहा है। ऐसा भी हो सकता था वो नीचे जाता है, ऊपर जाता। आई हैव डन इट लाइक दिस। व्हाट वी विल डू इज we will treat each particle separately and resolve the forces on that. We'll treat each particle separately. So I'm going to take this first particle here and I'm going to apply the Newton's second law. What is the Newton's second law? Resultant force is equal to ma. But in definition आप लिखेंगे मोमेंटम के तौर पे, यहां पे मैं आपको क्वेश्चन के तौर पे बता रहा हूं। If the particle is going up, the resultant force is tension, that is the forward force, minus m1g sine of theta, which is the backward force due to the weight, plus
the frictional force that we have, that is F. This is equal to what? M1A. This is equal to M1A, right? एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई. दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? ये वेट नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है. You will apply the Newton's second law and you'll have M2G minus T, because it is going down, so weight is greater than the tension and it is accelerating as well, is equal to M2A. Now if you've got these two equations, आपने एक चीज नोट करनी है कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, दोनों की टेंशन सेम होगी. आप टेंशन को एलिमिनेट करके सब्जेक्ट बना के जब इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी. आप इस टेंशन को जब इसके अंदर पुट करेंगे, आपको अगर फ्रिक्शनल फोर्स पता है, अगर आपको मैसेज पता है, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी. देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज 6 न्यूटन. ये आपके पास देखिएगा फ्रिक्शन ऐड कर रही है इस तरफ, दैट इज 6 न्यूटन. दिस इज टेंशन T. अच्छा, टेंशन इसकी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक्ट करती है, उस तरफ कर रही है. वेट इज mg हियर, राइट? अच्छा, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ठीक है? अब होगा क्या? You will first form the equation here, mg minus t is equal to ma. So m is 2, g minus t is equal to 2a. एक इक्वेशन ये बन जाएगी. दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? फॉरवर्ड फोर्स t है, t minus 6. एंगल तो है ही नहीं ना, उसकी तो जरूरत नहीं है. आपने हमेशा उस लाइन के लॉन्ग रिजॉल्व करना होता है ना. t minus 6 is equal to ma. So t minus 6 is equal to 8a. यहां का मास डिफरेंट है, वहां का मास डिफरेंट था. सो आपने एक्सेलरेशन निकाल ली है, t को सब्जेक्ट बनाए, 8a plus 6. Put it in this equation. This is 2g is 9.81 minus t is 8a plus 6 is equal to 2a. इसको सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा. a is 1.4. ये आपके पास मास यहां पे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है. अच्छा, ये इसका वेट कैपिटल mg है, टेंशन इज t. अच्छा, ये मास ऊपर जा रहा है, टेंशन इज t, वेट इज mg. ऐसे ही है. अच्छा, पहली इक्वेशन बनेगी, मैं चलो इसको पहली इक्वेशन बना देता हूं. ये ऊपर जा रहा है because acceleration is here. Resultant force is always in the direction of the acceleration. Resultant force is always in the direction of acceleration, right? ठीक है? We have here t minus mg is equal to ma, और ये वाली बनेगी आपके पास mg minus t is equal to ma. अब अगर आप गौर करें तो आपके पास, आपने एक्सेलरेशन निकालनी है, कहीं आपको टेंशन नजर नहीं आ रही है आंसर्स में. आप इसका मतलब है टेंशन को एलिमिनेट करेंगे. You will eliminate the tension. I'm going to make t the subject. T is mg plus ma. I'll put it in this equation. This is mg minus mg plus ma is equal to capital Ma. I've done substitutions here. This becomes mg minus mg. ये ma को मैं इस साइड पे ले गया. I've taken g common here. This becomes m minus m. I'll take a common here. ठीक है, जब मैं इसको, अच्छा, ये जब मेरे पास बनेगा ना, ये माइनस m हो जाएगा, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा. ये जो मेरे पास यहाँ बना था ना माइनस का, उधर जाके प्लस हो गया था, राइट? अच्छा, ये हो जाएगा m plus m. Are you getting what I'm saying? देखिए ना, मैंने इस चीज को जब मैं ओपन करूंगा, ये हो जाएगा mg minus ma is equal to ma. तो उधर जाके ये ऐड नहीं हो जाएगा. This is what I've done. अच्छा, this a becomes now g m minus m over m plus m, and physics works here. The answer is